Good day, everyone. I am Cyril Gallo Balakday from Grade 12 ABM St. Padre Pio. I am here today to discuss about world identities, differences. In this lesson, magfo-focus ako sa mga Muslim at sa Afghanistan. Be who you are and say what you feel because those who mind don't matter don't mind by Dr. Sayus. What do you know about Afghanistan? Afghanistan, its capital and largest city is Kabul. Pashto and Dari are its official languages. The Afghani or AFN is the currency of Afghanistan. Afghanistan is famous for its pomegranates in Asia. Afghanistan used to be a progressive Muslim country before the Taliban gained power. The Taliban, or students in the Pashto language, emerged in the early 1990s in northern Pakistan, following the withdrawal of Soviet troops from Afghanistan. When the Taliban ruled Afghanistan, they became a religious state or a theocracy and enforced laws that were fundamentalist in nature. What do you know about Muslims? So Muslims are people who follow or practice Islam, an Abrahamic monotheistic religion. The word Muslim derives from Arabic and means submitter. Muslims consider the Quran, their holy book, to be the verbatim word of God as revealed to the Islamic prophet and messenger Muhammad. The burqa is the most concealing of all Islamic veils. It is a one-piece veil that covers the face and body, often leaving just a mesh screen to see through. Some countries banned burqa or similar face veils because they wanted social cohesion, cultural assimilation, and integration in the country. In Germany, integration was a big issue after mass Muslim immigration from the Middle East. But overall, security has been counted as the most important reason. So, this is what burqa looks like. The English word mosque denotes a Muslim house of worship. The word evolved from the Arabic term masjid, which means place of prostration. During prayer, Muslims briefly kneel and touch their foreheads to the ground as a sign of submission, literally Islam, to the will of God. So this is what a mosque looks like. A hijab is a well worn by certain Muslim women in the presence of any male outside of their immediate family or sometimes by men, which cover the head and chest. For Islamic women who choose to wear the hijab, it allows them to retain their modesty, morals, and freedom of choice. They choose to cover because they believe it is liberating and allows them to avoid harassment. So this is what a hijab looks like. A niqab or niqab, also called a ruband, is a garment that covers the face, worn by some Muslim women as a part of an interpretation of hijab. So this is what a niqab looks like. A Thousand Splendid Suns by Khalid Hosseini. Maryam, a young girl in 1960s, grows up outside Herat, a small city in Afghanistan. Maryam has complicated feelings about her parents. She lives with her spiteful and stubborn mother, Nana, while her father, Jalil, a successful businessman, visits Maryam, his only illegitimate child, once a week. Maryam resents her limited place in Jalil's life. She wants to live with him, his three wives, and her half-siblings in Herat. She makes her wishes known by asking Jalil to take her to see Pinocchio for her 15th birthday. Jalil reluctantly agrees, but then never shows up to take her to the film. Maryam walks to Heart and finds Jalil's house, but he doesn't let her in, so she sleeps on the street. The next morning, Jalil's chauffeur drives Maryam home where she finds that her mother has committed suicide.
Maryam is taken to Jalil's home after her mother's funeral. Jalil's wives want nothing to do with Maryam, so they force him to let her marry Rashid, a widowed shoemaker in Kabul. At first, Rashid treats Maryam decently, but after miscarriage, he abuses her both physically and verbally. It becomes clear that Rashid's only use for Maryam is in her ability to replace the son he lost years ago. Growing up down the street from Rashid and Maryam is Layla, a young, intelligent girl from a loving family. However, the Afghani war against the Soviets disrupts Layla's childhood and both her older brothers leave to join the war. Layla seeks comfort from her best friend, Tariq, a boy a few years older than her. Just before Layla reaches adolescence, her parents receive news that both of their sons have been killed. A few years later, war reaches Kabul and bombs fall on the city regularly. By now, Tariq and Layla are teenagers and in love. As Tariq tells Layla that he and his family are fleeing to Pakistan, the couples make love for the first time, quickly and passionately. A few days later, Layla's parents decide to leave Afghanistan as well, but as they are packing, a rocket hits their house, killing Layla's parents and wounding her. Rashid and Maryam nurse Layla back to health, and after she recovers, a stranger, Abdul Sharif, brings her news that Tariq has died. Devastated and realizing she's pregnant with Tariq's child, Layla agrees to marry Rashid. Maryam is initially hurt and threatened by Layla's presence, and refuses to have anything to do with her. However, after Layla gives birth to a daughter, Aziza, the women come to see themselves as allies against Rashid's abusive, manipulative ways. A few years later, Layla gives birth to a son, Zalmay. Then one afternoon, after years of abuse and sadness, Layla is shocked to see a man standing at her front door, Tariq. Tariq and Layla spend the afternoon together while Rashid is at work. Layla and Maryam realize that Rashid hired Abdul Sharif to tell Layla about Tariq's untrue demise so she wouldn't run away. When Rashid finds out that Tariq has come home, he brutally beats Layla. With a shovel, Maryam kills Rashid. The next day, Maryam turns herself over to the Taliban in an effort to clear the way for Layla to find sanctuary for herself and her children in Pakistan with Tariq. In Pakistan, Tariq and Layla marry and finally begin the life they dreamed of so many years ago. With time, both of Layla's children warm to Tariq and they enjoy their new life. But in September 2001, their happiness is overshadowed by news that United States has attacked Afghanistan. Following the US invasion, conditions in Kabul improved, and Layla insists that her family move back home so they can help rebuild their city. They stop by Herat on their way to Kabul, where Layla visits Mariam's old home and is able to come to terms with her grief over Mariam's execution. Layla and Tariq build a new life in Kabul. Layla becomes a school teacher at the orphanage where Aziza once lived. And when Layla becomes pregnant, she decides that if she has a girl, she'll name her Maryam. So this is already the summary of the story. So yung story is patungkol sa dalawang Afghan women, which is si Maryam, an illegitimate child, at si Layla na orphan. So nagpakasal sila sa iisang lalaki lamang, which is si Rashid. Sa Muslim po kasi, pinapayagan na ang isang lalaki ay makapag-asawa hindi lamang isa o dalawa, kundi tatlo o higit pa na asawa. Pero, ang mga babaeng Muslim ay hindi pinapayagan. Kailangan muna nilang makipag-divorce sa kanilang asawa in order to marry another man. So bakit hindi pinapayagan ang babaeng Muslim na makapag-asawa ng higit sa isa?
Dahil nga, isang halimbawa po dyan, kung ang babae ay may 2 asawa at siya'y nabuntis, it's hard to identify who's the father. So let's go back to the story. So Mariam and Laila both experienced violence sa kanilang asawa. So para sa akin, nagpo-focus yung kwento sa rights of women, especially under Taliban. So yung Taliban kasi, sinusupport nila na magkaroon ng patas na pananaw sa mga babaeng Afghan. They said they will not prevent women from being educated or having jobs. So let's watch a feminist video entitled Burqa Avenger, produced in Pakistan. ये है हलवापुर, मेरा शहर, मेरा घर। बचपन में एक खौफनाक वाक़ये के हाथों यतीम हो गई। तब एक नेक शख्स ने मुझे अपने घर और दिल में जगह दी। वो मेरे सरपरस्त बन गए और उन्होंने मुझे एक कदीम हुनर सिखाया, तख्त कबड्डी स्टाइल। किताब, कलम और जदीद कलाबाजी से लड़ने का फ़न। अब मैं अपनी क़ुव्वतों को अच्छाई के लिए इस्तेमाल करती हूँ। अमन और इंसाफ, इल्म और किताब की दोस्त हूँ। जुल्म और जहालत की आंधियों से टकराती हूँ, क्योंकि मैं हूँ बुर्का अवेंजर। शाबाश। जिया मेरे बच्चे, अंडे तोड़े बगैर पकड़ने हैं। अपने हाथ नर्म रखो और अपने हवास कायम। याद रखना, तख्त कबड्डी में हथियार की ताकत नहीं, बल्कि मुकम्मल सलाहियत और ज़हनी चुस्ती जरूरी है। जी कबड्डी जान। चलो फिर से करें। क्या बात है जिया मेरे बच्चे, ये एक्सरसाइज तो तुम रोज करती हो। तुम्हारा ध्यान कहीं और तो बटा हुआ नहीं है क्या? कबड्डी जान, मुझे डर रहता है अगर बाबा बंदूक और उसके गुंडे इकट्ठे हमला कर दें तो पता नहीं मैं मुकाबला कर सकूंगी कि नहीं। जिया मेरे बच्चे, तुम छोटी सी थी जब मैंने और तुम्हारी अम्मी ने तुम्हें गोद लिया था। मुझे तभी पता था कि तुम सब बच्चों से मुख्तलिफ हो।
तुम में एक ताकत थी, एक बहादुरी, एक मजबूती। इसलिए मैंने तुम्हें तख्त कबड्डी सिखाई। यकीन जानो तुम हर मुसीबत का मुकाबला करने के लिए तैयार हो। किसी भी मुश्किल का सामना करने के लिए तुम्हारे पास तख्त कबड्डी है। परेशान ना हो और अंदरूनी सुकून की एक्सरसाइज करती रहा करो, तब तुम्हें कोई मुश्किल पैदा नहीं होगी। जी शुक्रिया कबड्डी जान। मेरे ख्याल में आज के लिए इतना ही काफी है। जी कबड्डी जान, मैं भी क्लास पढ़ाने की तैयारी करती हूँ। ओहो मूली, ड्रामे बंद करो यार, स्कूल भी पहुंचना है, लेट हो रहे हैं। ओह आशु, अभी तो बहुत टाइम है यार, अभी तो मैं मूली खाऊंगा, मूली। ओह जिया टीचर आ रही हैं। अस्सलाम वालेकुम मिस जिया। वालेकुम अस्सलाम बच्चों। मिस जिया, आज तो स्कूल में हारून का कॉन्सर्ट भी है ना? जी बच्चों, आज ही है कॉन्सर्ट। कितना मजा आएगा। मैंने तो आज नए कपड़े भी पहने और गोलू को भी नहलाया है। ओके आशु, लेट मत होना स्कूल से, आधे घंटे में मिलते हैं। जी मिस। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। कितनी अच्छी है ना, मेरी फेवरेट टीचर है। पता है, जिया मैडम की वजह से ही लड़कियों का स्कूल चल रहा है, वरना कब का बंद हो गया होता। अरे रुको, वो मोटा आदमी गोलू को उठा के ले गया है। बचाओ गोलू को, कोई तो बचाओ गोलू को। पीछा करो उसका। वो देखो। हाँ मुन्ना बेवकूफ, और इसको आग से दूर रखो। तेरे इस टकले में भेजा है कि नहीं? अरे ये फट गया तो सब कुछ ठुस कर जाएगा, पटाखा मारकर। वो रहा गोलू। चलो गोलू को बचाएं। गोलू अरे रुको, और मुन्ना पकड़ो इनको। वटेरो पचेरो आए हैं। बाबा बंदूक, तुम बस रोटियां ही तोड़ते हो या कोई काम भी करते हो? मैंने तुम्हें लड़कियों का स्कूल बंद करवाने का कहा था। वडेरो बजेरो, तुम्हारा काम अभी के अभी हो जाएगा। अच्छी बात बाबा बंदूक। ये फलाही इदारे वाले बेवकूफों ने मुझे लड़कियों के स्कूल चलाने के लिए पैसे दिए थे। भाई साफ सी बात है, मैं ये पैसे लड़कियों की पढ़ाई पर जाया कभी नहीं करने लगा। पैसे तो मेरी जेब में रहेंगे और तुम भी बेफिक्र रहो। एक बार ये स्कूल बंद हो जाए तो तुमको भी हिस्सा मिलेगा। कम से कम कोई अच्छा सा साबुन खरीद के नहा ही लेना। गंदगी का ढेर लगते हो। बेशक वडेरो बजेरो, औरतों का क्या काम पढ़ाई से? उन्हें घर में रहना चाहिए, साफ सफाई करें, बावर्ची खाने चलाएं। हाँ तो और क्या बाबा बंदूक, उन्होंने कौन सा पढ़ लिख कर कंप्यूटर बन जाना है? पढ़े या ना पढ़े, बनानी तो रोटियां ही हैं। थुई, थुई।
वो लड़कियों का स्कूल? अभी तो बड़ा फुदक रही है बेवकूफ मेंढकी की तरह। सही कहता है बाबा बंतु, इनका स्कूल बंद होगा तो इनका दिमाग ठिकाने लगेगा। स्कूल में क्या सीखा इन्होंने? हम सिखाते हैं इनको सबक। पकड़ो इनको। जंगल महफूज नहीं है। जो भी था उसने हमें बचाया है। भूत था। भागो इधर से, जल्दी करो, भागो। ओहो मूली, बेवकूफ। भूत वूत कुछ नहीं होता। चलो, स्कूल के लिए लेट हो रहे हैं, चलो। चलो शाबाश, सब अपने घरों को जाओ। ये स्कूल अब नहीं खुलेगा। लेट क्यों हुए हो? तुम्हें मार पड़ी है? कितने आदमी थे टिंडा? बाबा बंदूक, बस एक। हाँ, कोई अंदर जाने की कोशिश करे तो टांगे तोड़ देना। स्कूल खोलेंगे लड़कियों का, हाँ? मॉडर्न होना है इन्होंने। औरतों का क्या काम पढ़ाई से? नहीं, नहीं, ये स्कूल कैसे बंद कर सकते हैं? तालीम हमारी जरूरत है, हमारा हक है। आप हमारा ये हक नहीं छीन सकते। हम लोग ही इस मुल्क का मुस्तकबिल हैं। हम बच्चियां ही तो कल की माएँ हैं। हमें अपना मुस्तकबिल संवारने दें। हमारी जिंदगी तबाह करके क्या मिलेगा? माएँ अगर तालीम नहीं हासिल कर सकी तो आगे की नस्लें भी जाहिल ही रह जाएंगी। हमें जहालत के अंधेरों में मत झोंको। तालीम के बगैर हम सब बर्बाद हैं। बाबा बंदूक, वैसे इन मासूम लड़कियों का क्या होगा अब? ज्यादा फरिश्ता ना बन। जो काम बताया है वो कर। भगा इन सबको यहाँ से। यह है हलवापुर न्यूज और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। मैं आपका मेजबान। एक बहुत अफसोसनाक खबर, आज हलवापुर गर्ल्स स्कूल बंद हो गया। क्यों? ऐसा क्यों है कि हमारी लड़कियों से तालीम जैसा हक छीन लिया गया? अब क्या होगा? उनका खाना पीना भी रोक देंगे। ये सिर्फ एक अफसोसनाक वाकया है। कोई इसके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठा रहा? ऐसा जुल्म आखिर क्यों? यही थी ब्रेकिंग न्यूज और आप देख रहे थे हलवापुर न्यूज। आज ही जाएं burkavenger.com पे मजेदार मोबाइल और वेब गेम्स खेलें, कॉन्टेस्ट में हिस्सा लें और जीतें मुफ्त टी शर्ट्स, बेशुमार इनामात और बहुत कुछ। लॉग ऑन टू tazi.com और बुरका एवेंजर का ओरिजिनल साउंड ट्रैक डाउनलोड करें। यानी आज कॉन्सर्ट नहीं होगा? यार मूली, तुझे कॉन्सर्ट की पड़ी है? यहाँ लड़कियों का स्कूल बंद हो गया है।
एक कातिल। जान लबाते आए जीना है बड़ा मुश्किल, पर अली इमाम है तेरा हो तैनू कदाए गम। हौसला रख तू बंदिया क्यों नैन करे बुरनम। अब क्या होगा? कहाँ पढ़ूंगी? स्कूल में इतना मजा आता था, क्या मैं अनपढ़ रह जाऊंगी? काश काश इन्हें कोई रोकने वाला होता। अब क्या होगा? कहाँ पढ़ूंगी? स्कूल में इतना मजा आता था, क्या मैं अनपढ़ रह जाऊंगी? काश काश इन्हें कोई रोकने वाला होता। हम तो गए। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? मैं कोई वीना मलिक लगता हूँ? जाओ पकड़ो इसे। तुम्हारा खेल खत्म बाबा बंदूक। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हारून। आप लोगों पर जब मुश्किल आई तो आपने उसका डट के मुकाबला किया। मैंने ये सब देखा जो आज हुआ। ये बहुत खुशी की बात है कि आपका स्कूल एक बार फिर खुल गया है। चलो कॉन्सर्ट शुरू करें। Are you ready? Let's go! जे आवे दम ते जावे गम, हरी दम दम दमादम दम। जे हो ईमान ते ना घबरा, दूर होवे हर गम, दूर होवे हर गम। जे आवे दम ते जावे गम, हरी दम दम दमादम दम। जे हो ईमान ते ना घबरा, दूर होवे हर गम, दूर होवे हर गम। हमें मौसीकी से नफरत है। ये जो भी है बुर्कापोश ना अहल थी, जवाब तो देना पड़ेगा उसको। जे आवे दम ते जावे गम, हरी दम दम दमादम दम। जे हो ईमान ते ना घबरा, दूर होवे हर गम, दूर होवे हर गम। जे आवे दम ते जावे गम, हरी दम दम दमादम दम। जे हो ईमान ते ना घबरा, दूर होवे हर गम, दूर होवे हर गम। बोल अली हरदम, 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 दूर
लेकिन वो थी कौन? वो बुर्का एवेंजर थी। आप जानते हैं कि हर मुसीबत से बचाव का क्या तरीका है? तालीम। किसी के रोकने पर आप तालीम हासिल करने से ना रुकें। चाहे लड़की हो या लड़का, तालीम हासिल करना आपका हक है। अगर कामयाब होना चाहते हैं तो अपनी किताब और कलम को अपना दोस्त बनाएं। अगली बार मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें और याद रखें, अंदरूनी सुकून। The lady in black. Don't mess with the lady in black. The lady in black. The lady in black. Don't mess with the lady in black when she's on the attack. Camouflage shadows and darkness. No guns but got ammo regardless. A backpack so she's coming prepared to leave the opposition in submission, running in fear. Yeah, superhero got him kicking and screaming. In hysterics, these derricks had envisioned the demon. A spirit so quick to deliver a beating to the enemies of peace, love, logic and reason. Hit him with a logical reason. Kill extremism, corruption and just stop it from breathing. The way it was, she'll be taking it back. So tune in for the story of the lady in black. Don't mess with the lady in black. The lady in black. The lady in black. Don't mess with the lady in black when she's on the attack. Don't mess with the lady in black. The lady in black. The lady in black. Don't mess with the lady in black when she's on the attack. Lean covered from her head to her toes in a one-piece slick invisibility clothes. She got her eyes visible so she could give you the look and lay the smack down on all these dirty killers and crooks. Like a panther going in for the attack in the wind. The lethal weapon in her hands is a book in a pen. The silent ninja vigilante in the dark of the night would never roll over cause she has to stand up and fight. Her fist bagging harder than the drums in the song. Reminisce about the time before the guns and the bombs. The way it was, she'll be taking it back. So stay tuned for the story of the lady in black. Yeah. Don't mess with the lady in black. The lady in black. The lady in black. Don't mess with the lady in black when she's on the attack. Don't mess with the lady in black. The lady in black. The lady in black. Don't mess with the lady in black when she's on the attack. This movie is produced in Pakistan that goes against the edict that Muslim girls cannot have an education. Ang Burqa Avenger ay nagsalaysay ng mga pakikipagsapalaran ni Gia, isang masugod na guro sa paaralan sa araw, isang superhero na nakasuot ng burka sa gabi. Bawat episode, kinakalaban niya ang mga tulisan at politiko na gustong ipasara ang paaralan ng babae kung saan siya nagtuturo. Ang palabas na ang tagline ay "Don't Mess with the Lady in Black" ay sumusunod sa mga eskapade ng tatlong batang Pakistan na hahanap ang kanilang mga sarili sa problema para sa regular na makikipag-usap sa mga Islamic extremist, tiwaling Pakistani na politiko at business tycoon. So si Gia, nakikipaglaban siya sa mga kontrabida gamit ang mga artikulo ng pag-aaral at tinatapos ang bawat episode sa mga panlipunang mensahe ng pagbibigay kapangyarihan at edukasyon ng kababaihan at laban sa ekstremismo sa relihiyon. Naging controversial ang cartoon character sa pagsusuot ng burka. Bahagi ng sistema ng Islamic veiling na kadalasang itinuturing na sexist. Gayunpaman, isinusuot ni Gia ang kanyang burka upang protektahan ang kanyang pagkakakilanlan, tulad ng mga sikat na western superhero tulad ni Batman na nagsusuot ng mga maskara upang protektahan ang kanilang sarili. Kaya ang burka ay nagiging kasangkapan para sa pagbibigay kapangyarihan na nagpapatunay na ang mga relihiyosong pagkakakilanlan at edukasyon ng mga babae ay hindi eksklusibo sa isa't isa. Kung gusto mong maging matagumpay, gumawa ng mga libro at panulat ang iyong pinakamatalik na kaibigan, sabi niya sa unang yugto ng serye. Ang palabas ay pinuri dahil sa malakas na mensahe nito ng paggamit ng edukasyon, hindi ng mga baril upang malampasan ang mga hadlang. Gumagamit si Gia ng mga libro,
panulat at mga bag ng paaralan bilang mga sandata para talunin ang mga tiwaling politiko at matigas na otoridad sa relihiyon. Ang palabas ay gumaganap din bilang paglaban sa regressive at panupil na paninindigan ng Pakistani Taliban sa edukasyon para sa kababaihan. For me, this story is all about the importance of education, because education helps to develop not just only ourselves, but for our country. Gender equality is more than a goal in itself. It is a precondition for meeting the challenge of reducing poverty, promoting sustainable development, and building good governance. By Kofi Annan. That's all. Thank you for listening. Advance Merry Christmas and Happy New Year.